अधा डरती आम टेस्ट हाँपाई कि ब्लड जावाई कि ब्लड गलापर टेस्ट हम रिपोर्ट आसो. सो नाउ द डिजिटल हेल्थ इज नाउ टेकिंग दैट. देन थर्ड है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पैंकी ऑल्सो बिकॉज आप जानीपारे डाटा कौन रोग आसूँ कौन मेडिसिन कंजम्पशन अच्छी कौन इन्वेस्ट अच्छी दैट विल गिव ए ट्रेंड एंड ट्राजेक्टोरी. सो 2010 कौन थी 2020 कौन अच्छी 2030 कौन हम सो दैट योर पॉलिसी कैन बी गाइडेड एज पर दिस. सो डिजिटल हेल्थ डिजिटल मिशन जब कहते मैडम. सो नाउ इट इज द फ्यूचर फॉर द स्टार्टअप्स फॉर द इनोवेटिव रिसर्चर्स as well as for the business house as well as for the common man. So digital health is a big future. It is expanding like anything, and by 2030 maybe most of the corporate hospital will going to be paperless, and most of the government sector say madam abha hochi, then by 10 years also will have a data. So digital health is a part. Digital also give you a huge potential for the employment also. So एटा को हमें केमिति नहीं परिबा ता पे मो पाखे साइड रे अछन विजय साहू. ही इज ए पेटेंट साइंटिस्ट एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द पर्सन NIDC रु सब अप्रूव कर टेक्नोलोजी पैंकी मिनिस्टर ऑफ साइंस रु. तो ये भाई आम हेल्प नहीं पारिबा. एंड हेल्थ कनेक्ट इज थ्रू दिस आई कैन रीच टू द मिलियंस ऑफ दी आइदर ओडिया हूँ बाहर हूँ. दे शुड थिंक दैट डिजिटल हेल्थ इज ए पोटेंशियल फॉर देम टू एक्सपैंड द हेल्थ केयर नीड, एंड दैट कैन बी डन अफोर्डेबली, एंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल, and also it is acceptable, not in urban, it can be also in remote areas also. So that is the future. We have to think that digital health is going to revolutionize the health in future. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक चौधरी जो कथा कहते. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लान रखिए नेक्स्ट 5 इयर्स रे जहाँ तंकर आकलन होची जे डिजिटल हेल्थ सेक्टर रे 80% इन्वेस्टमेंट बढ़िबो डिजिटल सेक्टर रे. एटा सेंट्रल गवर्नमेंट तंकर जहाँ विजन अच्छी जहाँ प्लान करूछन. आउ इंटरेस्टिंग फैक्ट गोटे आसुची जतले नेशनल मीडिया रे जो खबर प्रकाश पाउची जतले कोविड हेइतिला तो नॉर्थ इंडिया रो जो डॉक्टर माने थिले प्राय 80% डॉक्टर से आडप्ट करथिले टेलीमेडिसिन को. एवं जदि देखिबा हमें साउथ और वेस्टर्न रे एटा 50% थिला, बट ओडिशा जो कि बिलोंग्स करुच्ची ईस्टर्न ओडिशा रे ईस्टर्न इंडिया रे एटा ओनली 30% थिला. बट आम एक्सपेक्ट करिया समस्त एक्सपर्ट माने अछंदी सेटा इंक्रीज करिथिबो. एबे टेलीमेडिसिन बा कंसल्टेंट्स जो नबा ऑनलाइन रे सेटा बढ़िथिबो निहाती. मु ना मु रिक्वेस्ट करिवि डॉक्टर विजय कुमार साहू को सीनियर रीजनल डायरेक्टर NRDC Ministry of S&T Government of India. The topic is healthcare innovation and startups. Sir. Good afternoon everyone, and thank you Argus for giving this platform to share our thought and also how we connect the dot, bringing mind to market. So today technology plays a very important role in tracing, testing and treating of COVID-19. We lost many of our known faces, but certainly these challenges create opportunity. And I am privileged and happy to inform you that Honorable Minister also touched upon India was importing PPE kits. We transfer and commercialize as many as technology to the industry and MSME, those who are making the product, making us proud, and India is competitive in exporting PPE kits. Not only to that, today if you will see in India, I am sitting at Visakhapatnam, the largest medical devices ecosystem has developed in India under Make in India at Visakhapatnam. At that time, during that COVID, we started first RT-PCR. More than 500 ventilator has been supplied. So here the opportunity what we have created at that time also, we got a business, created job opportunity, and also mitigating the challenge, and technology plays a very important role. And as far as technology, this sector, health sector, we must not confine to particularly medical. All issues what we are facing, lot of startup, those who are making us proud in very interesting platform, not only regionally at globally also. Some of the doctor who have a startup here who are sitting in front of me, and they are part and connected to the WHO health center, because Visakhapatnam is blessed with a WHO innovation center. Dr. Ashok Badmali is also here. The Sanjeevani QPR, that CPR, that plays a very important role, and also WHO was quite interesting how that can be connected to the mass in manufacturing. Not only to that, we have seen how startup like I will say in Bhubaneswar, one of the startup who got an opportunity of doing RT-PCR test as a startup. So in that challenging time, these are the people who are making the difference, and also how our doctor, researcher who are creating such kind of technology in the form of IP by doing value addition,
my role is to do the value addition, market survey, business intelligence, intellectual property protection, because India is lacking that part in the global innovation index. My role is to support them, handhold them, shoulder them, how a technology developed at lab scale can be transferred, commercialized to the industry, MSME and startup. That's we do, and that we did during pandemic also, and lot of startup, MSME and also industry making us proud in creating such indigenous product, and that's the role I will say in a collectively we are doing, because we are bringing mind to the market, lab to the land, technology at bedside to the bedside. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू. नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, CEO DMC अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर. उनका टॉपिक है मेडिकल टूरिज्म पर आप बात करें. थैंक यू. Namaste everyone, and thank you August for the invitation to this panel discussion today. On medical tourism, I would like to first share that this medical tourism started where people used to travel international boundaries to seek medical care. And today, if you look at analysis of Indian geography, most of the people, if I were to analyze, coming to Odisha or going out of Odisha, there are certain things, certain diseases, ailments get addressed outside the state boundaries. So, primarily if you look at Indian healthcare, India is growing to become the hub of medical tourism in the future, the way Indian healthcare infrastructure is coming up. No doubt we have combination of well-trained doctors as an expertise, but what is currently required is to bring them into right infrastructure to drive disease management or appropriate management of the disease as per incidence of disease which needs to be get addressed by the state. So currently if you look at domestic market where we stand today, lot of patients move out of the state for seeking medical care. And if we are able to address by strengthening the infrastructure, because currently if I look at today's date, as comparing 12 years ago when I visited the state, lot of things have come up on a positive side. We have strengthened the healthcare infrastructure. We have got lot of talents who are working outside from Odisha, and they are successfully doing lot of good work in the state to stop transfer of patient outside the state. And that is what is really required in making a hub, Odisha today in the future. The way forward in which we need to address in certain areas to strengthen the medical tourism would be looking at liver transplant program, looking at aesthetics program, and developing full-fledged fertility services apart from joint replacement. Because there are certain things which we need to address what is the requirement of the state to reduce flow out from the state, and also to get other states' patients coming to this state is the requirement. So with that I would say, apart from the talent base, certain healthcare infrastructure needs to be strengthened, and that's where we are moving. As in Apollo Hospital, I can share one of the things that we are right now focusing is reducing the length of stay in the hospital to be the key driver of patient coming to the hospital. Because primarily what has been earlier happening is the conventional surgery driving the patient to stay for a longer duration is one of the key focus that we are really working on, and also on the clinical outcomes to build good amount of medical tourism flowing into the state. Thank you. Thank you, Dr. Alok Srivastav. Now may I request Dr. Suhas Basant Aradhe वो अपना मंतव्य रखे. हेल्थ केयर फॉर ऑल. Namaskar, Pranam. I'm Dr. Suhas Vasantaradhi, Regional Director, Palace Group of Hospitals, situated at Patna. I have travelled at least 10 states and 20 cities in our country, right from Kerala, Kolkata, now in Bihar. Bhubaneswar also I have worked. The emphasis which I am giving now, I will cite 2 examples. मैं आपको 2 examples दे दूँगा. साथ में हमारा एक वेरी स्पेशल डिश हमारी उड़ीसा की होती है डालमा, उसके बारे में कुछ कहूँगा और बाद में एक श्लोक बताऊँगा. बस 5 मिनट का काम है मेरा. बट पॉइंट ये होगा कि हेल्थ केयर फॉर ऑल, इंटीग्रिटी
coverage and competence. Example number 1, हमारा एक नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे एकदम इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट था, ब्रेस्ट कैंसर के लिए उसको आइडेंटिफाई किया गया था, बट कैसे हो गया प्रोसेस देखिए। वहाँ पे जीविका आशा वर्कर के पास गांव की जो पेशेंट थी वो पहुँच गई। हफ्ते में एक बार उसको वहाँ जाने की आदत थी, तो बताया कि ऐसे ऐसे कुछ है ब्रेस्ट का, मुझे कुछ नेट पे देखा है, आप ज़रा चेक कर लीजिए। आशा वर्कर ने कुछ उसको मालूम था वैसे चेक कर लिया। तुरंत ही बगल में उसने सजेस्ट किया कि बगल में ही एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक रेडियोलॉजी सेंटर है, वहाँ चले जाइए। वहाँ जो कुछ स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया उनका, हार्डली 1000 रुपीज़ में हो गया। वहाँ पे कनेक्ट था पुणे बेस्ड वन ऑफ दी रेडियोलॉजी सेंटर्स के, वहाँ से इमीडिएटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो कुछ उनको टेस्ट हुई स्क्रीन पे पता लग गया कि शायद कैंसर है। तुरंत ही आशा वर्कर ने बताया कि यस, हमारे पास स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीम है, इमीडिएटली चले जाओ। कोलकाता में XYZ हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँच गई। स्कीम के अंडर उसका ट्रीटमेंट हो गया, वेरी राइट ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में हो गया, कैंसर गॉट क्योर, द पर्सन इज स्टेइंग अलाइव 5 years हो गए। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन डिस्ट्रिक्ट में 18 साल की बच्ची है, उसकी शादी होनी है, उसको थोड़ा एपिलेप्टिक अटैक आया, पता लग गया कि कुछ प्रॉब्लम है। X लोकेशन, Y लोकेशन, Z लोकेशन, सब जगह 5000, 10,000, 15,000 टेस्ट हुए। फैमिली के पास जो पूंजी थी ख़त्म हो गई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में। ओके, माइनॉरिटी कम्युनिटी की लेडी है, उसका शादी होना है, पता नहीं लगा, अचानक CTVS सर्जन के पास चली गई, पता नहीं क्यों गई, पता लग गया कि उसके हार्ट में एक कैंसरस ग्रोथ है, उसके कारण कुछ पार्टिकल्स जाके ब्रेन में स्ट्रोक होने के कारण थोड़े सीजर्स आए हैं। तुरंत ही उसका 1,80,000 डाल के ऑपरेशन हुआ, वो ग्रोथ चला गया। उसको चंद मेडिसिन देने के बाद शी इज स्टेबल नाउ, शी इज़ विलिंग टू फाइट एंड गो फॉर अ मैरिज। बट उनके फैमिली में पूरा घर बेच के 1,80,000 जमा किया। आयुष्मान स्कीम लागू है, सब कुछ उपलब्ध है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तो पब्लिक प्राइवेट एंड फैमिली पार्टनरशिप कहाँ काम करती है? फर्स्ट एग्जाम्पल में। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, आशा वर्कर लाइक अ फैमिली केम फॉरवर्ड, पब्लिक पार्टनरशिप with private did the testing, there is no profit motto, the integrity is there, okay. The support of competence of somebody sitting in Pune with artificial intelligence is there, so you get the competency there, and the coverage of Ayushman or Swasthya Sathi scheme is known to Asha worker, the person is already enrolled, 1 रुपया घर से खर्चा नहीं हुआ, जो 500,000 रुपये का टेस्ट हुआ उसको भी लोकल मुखिया ने उसको वो कैश में दे दिया। तो शून्य एक्सपेंस, पब्लिक प्राइवेट फैमिली पार्टनरशिप हैपेंड, द पर्सन गॉट क्योर्ड, हैप्पी, द फैमिली इज इंटैक्ट, फाइनेंशियल स्टेटस इज इंटैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल में ट्रीटमेंट तो हुई, आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंसेस चले गए, बहुत दर दर की ठोकरें खाए, फैमिली टूटने पे आई थी, एंड फाइनली दे हैव सोल्ड देयर हाउस, नथिंग इज अवेलेबल, स्कीम्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर। सो जो हमारा डालमा जो एक डिश है यहाँ पे, वहाँ करने के लिए सारे वेजिटेबल्स लगते हैं, दाल लगती है, हल्दी लगती है, सारी चीज़ पॉटपोरी हमारे इंडिया, हमारे भारत देश में उपलब्ध है। बट जब सारी ट्रीटमेंट इकट्ठी आती है तीनों पार्टनरशिप के जरिए, वैसे ही वेजिटेबल्स, हल्दी, दाल प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी, वो जो डालमा होता है बढ़िया होता है। वेयर एज थोड़ा मिस्टेक हो गया, the partnership is not working well, everything is available, that dalma dish will not happen well. So what I say, integrity and the reliability of the initial testing is important. Whenever initial advice is given, the right ASHA worker or the right doctor or the right RMP, whichever is Ayush doctor available, the advice has to go, and then all the other sections need to work together. In our India, we are always crying कि हमारे पास
3,60,000 और 36 लाख बेड्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध है उसमें ट्रीटमेंट करिए, तीनों पार्टनरशिप इकट्ठा लाइए, सारी चीज़ उपलब्ध है, फ़ायदा लीजिए एंड सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। और लास्ट कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मतलब यही है कि सर्व प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबका भला हो, किसी को कोई दुख न रहे। ओम शांति शांति शांति। ये पॉसिबल कब है? व्हेन इंटीग्रिटी, competence, coverage is there of public, private and family partnership. धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर आराध्य, बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया हेल्थ केयर फॉर ऑल को। अभी मैं अनुरोध करी डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्र, क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी इन हेल्थ केयर। डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्र होचंदी मेडिकल सुपरिटेंडेंट आमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर। Namaskar, Professor Mahapatra and all eminent dignitaries on the dais, senior doctors, media personnel and ladies and gentlemen of the dais. We are right now, we having all through the day we have talked a lot about the unequal distribution of healthcare facilities. We have iconic figures like Dr. Malchandani and Dr. Hota who have set a benchmark in taking healthcare to the most deprived. There is no doubt that there are n number of very eminent doctors from Odisha and from India who have set a very high level of care and who are at the cutting edge of technology in healthcare. And we are now going for this healthcare for all concept according to the SDG goals. So with all these things happening, myself being a full-time administrator, I am a MD Hospital Administration from AIIMS New Delhi. I face a different aspect of healthcare in my profession. So when we talk about quality and patient safety, there is a lot to be done. There is a lot of different aspects. So when we talk about quality, if you go by the statistics from various literature, it is said that 1 in every 10 person is having harm from healthcare, and this is in the US. And around, if 100 people are treated, 10 among them in the developed countries and 7 among them in the developing countries develop a hospital-acquired infection. And aircraft travel is not new to any one of us, and there is a 1 in 10 lakh chance that you will have an accident while you are traveling by aircraft. But the literature says that there is 1 in 300 chance that you are likely to have some kind of harm while having a treatment in a hospital. So quality and patient safety is an important aspect that we have now to focus on. Yes, there is one aspect of it where we are challenging to make healthcare reach out to the people. There is no doubt that we are at the front edge of technology and the expertise of medical care, but quality and patient safety is something that we really have to look into. The West is already into it. We are now beginning to have various forums. You have NABH, which is known to all of us. If the government has the NQAs for the public hospitals, the Lakshya standards for the Ops Gynae department, you have Kayakalp, which is there in AIIMS for the sanitation, other things. So there are various forums which are coming forward, which is bringing in quality and patient safety. And the WHO has made the global action plan on patient safety 2021 to 2030. The government of India has the national framework on patient safety 2018 to 2025. The various policies are being made and various things are in here to bring about patient safety and quality. But coming to the basic question, what exactly do we understand by quality healthcare? So if I would go by the WHO definition of it, quality healthcare basically means it should be evidence-based, it should be safe, and it should be people-centric. These three things is something that we must focus on quality healthcare, and it necessarily does not mean a 5-star hospital. It does not need the various advanced procedures. It should be people-centric, it should be affordable, and I think a lot of work needs to be done in this, and forums like this
And I am lucky that I have been able to share the dais with such eminent personalities and convey this message to such senior doctors here. We should discuss more on this, and a lot of work needs to be done on providing quality health care and ensuring patient safety in hospitals. Thank you. so much, Dr. Siddharth Misra. ଏବେ ଓପନ୍ ସେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି। Yes, sir. There are so many here. Hello. Thank you for the nice deliberations everybody has given. Really, it is worth. My question will be in Odia, and the people, particularly Dr. Mahapatra, can better answer it. आयुष विशेष भाव में आयुर्वेद प्रचार और प्रसार तथा औषधीय वृक्षलता गुल्म संधान गवेषणा और रोपण पाई कृषि उद्यान विभाग जंगल विभाग सह मिलित प्रचेषा हेउछि कि जदि हाँ तार सविशेष विवरणी मु मागिबी। द्वितीय कथा है भारत केते मूल्य आयुर्वेदिक औषध विदेश को रप्तानी करुच्ची एक पचार उद्देश्य होची आम मैंने जहाँ सब कहूए गोटे है सर्जिकल एवं आउ गोटे है मेडिसिन एंड केयर जो आम कहूए ऑल आर बेस्ड ऑन एलोपैथी बट इंडिया हैज गॉट द हाईएस्ट पोटेंशियलिटी in case of Ayurveda and the starting point Dr. Mahapatra has given and this the gentleman from Patna, Mr. Aradhya, he has also concluded his speech also with Vasudhaiva Kutumbakam and these slokas. So my point is Ayurveda is the best only answer and we have to develop that vocal for local. Thank you. I think it's a very important question. If you look at the Veda, Ayurveda is a part of Atharva Veda. Because we understood that without good quality life, a good quality human being is not possible. So Ayurveda is one of the mother of all medicine. Most of the allopathy medicine has a herbal background, which is a finer product. So we have even the allopathy medicine from the plant product. So there is no question that Ayurveda is refined to some extent to the allopathic medicine. The question is that allopathic medicine are costly, Ayurvedic cheap. Today the confidence of Ayurvedic medicine low because allopathic medicine give you quick and long term, I think short term use and long term effect. But Ayurvedic medicine is less harmful, it has a less cost and it may cause cure of the disease which many allopathic medicine may not give. Coming to the export of the medicine, if you go to different country, you will see Ayurvedic shops. Whether it is Australia, or England, in many part of the America, Dr. Das is there, he is there, he was in Australia for a long time. Ayurvedic has gone to many countries, but what you expected, there is no medical explosion in Ayurvedic. That is because of our attitude change in India and not patronization by government of India. They have started Ayush in 2005. It's a complementary medical practices to each other so that the costly medicine can be less prescribed and people can have a long-term cure by using herbal product. But it requires lot of mindset, attitudinal difference and also patronization by the medical doctors and government. It's not slogan standing here ki Ayurveda. They should really do the production centers, quality control. What is more important, we all know Tulsi is good for cough and cold. Something in Google is good for this. Maybe Brahmi is good for good memory. But where is the, it all right that Indian with a background of knowledge of Ayurveda or from Puran or Shastra or the books, we know that Ayurvedic is very helpful. But other countries they don't know. You have to provide the scientific evidence. Today, to get a scientific evidence, you say whether this was gone through field trial, phase 1, phase 2, phase 3. You know that COVID vaccine, even knew that COVID vaccine is going to work, it has to go through the phases. So Ayurvedic medicine has not gone through a time-tested process of class 1 medicine. Phase 1 trial, phase 2 trial, phase 3 trial,
and long-term clinical trial with control studies. Half people get this medicine, half people admit. So when you convince the rest of the world Ayurvedic is good, you have to have scientific evidence, which is lacking today. So most of the people, those who use it in India, the conviction, experience, personal communication, rather the scientific evidence based. So if you have to tell rest of the world take Ayurvedic medicine, then where is the evidence? That's the most important. सर ये जो मैंने भी अच्छा गोटे बड़ प्रश्न आसूची आगे गोटे भल एग्जांपल देवी कि आपण मैंने सब रामायण को विश्वास करती. देयर इज ए कॉन्सेप्ट दैट कि रावण आसला कि राम आसला बेलू लंका रू इंडिया आसला बेलू या सीता को नहीं गला से गोटे वेहिकल यूज करते जहाँ नाटा हूँ विमान, पुष्पक विमान. आ से विमान एत बढ़िया था कि जो नो फ्यूएल, नो एयरपोर्ट, नो इंजीनियर, जो चाहे बस पार. इवेन मुझे शुणी जो राम फेरिले से समस्त नहीं बार बसिक मैंने 5 लोग बसले आप देखले रावण चोरी गला बेले देख 1000 लोग. इट इज ऑल्सो कैपेबल सेल्फ एक्सपांडिंग. बट प्रोब्लेम कौन है जिते एरोप्लेन बाहर इंडिया रे फास्ट आसला पुणे 1930 रे ताकू इंग्रेज मैंने जानिक बसई से कॉन्सेप्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पुष्पक. व्हाट सारी सिंग आम सेम एग्री इट इज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. आम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूना ना जो आम कहूँ आज एलोपैथी मेडिसिन इज ओनली 500 और 5000 years, whereas आयुर्वेदिक मेडिसिन इज एज ओल्ड टेस्टेड मेडिसिन 3500 year old मेडिसिन. बट आम ताकू प्रॉपर स्टेज सार कहले से नहीं पारे. सार अच्छा रिसर्च हेड सार अलरेडी कहले मुझे आइलस आम कर सर ए फैटी लिवर यूज इंडिया 30% अच्छी आम से हलदी बटर मिल्क आपको देकरी वी आर गिविंग ट्रायल्स. मुझे कहि आप CCRS हो मो मैडम अच्छा ICMR मैडम अच्छा संगीता मैम लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल्स आर देयर. वी शुड कम अप विथ स्टार्टअप्स व्हिच आर डू द रिसर्च ऑन द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. यहीटा कले ही आम से आंसर दे पार एंड डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन आगे जापर. एंड वी आर ऑलवेज happy on the health approach, but only thing that we have to know the technology transfer, the process of getting evidences and how to use in the large scale. एटा जब आम कर डेफिनेटली आयुर्वेद मोस्ट लाइकली आगे को भी पड़े जापर. एंड सब लोग देखते वेस्टर्न कंट्री आसिक योगा कर नाचुरोपैथी करते योगा डे है होल वर्ल्ड जानीपारे. सो नाउ आम यहाँ कर मो सहित अच्छा डॉक्टर दिनेश स्वाई से फैटी लिवर कि योगा करके कम कर. He has gone. So these are the things are coming up. I request everyone, some of the जहाँ पर अच्छी scope of the research facility, they come up. And as Acharya sir भी कही already, he is open to help in any way for the research. Please come join hand with him. तो आमे करी परिबा. I think Durgesh also can take a message that everyone should connect to CCRS. Odisha रे हमर हे पर and Odisha already गोटे CCRS center अच्छी. Dr. Ashok Pandai थिबे and lot of people are there. तो ऑलरेडी आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये अच्छी आम समस्त मिसिल कर. तो समस्त आसतु आयुर्वेद मेडिसिन भी बहुत भल कि काम कर. बट वी नीड माइंड सेट. थैंक यू. सर आपन जो क्वेश्चनटा कहले तार आंसर मुझे दबा चाहूँगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत किसी इनिशिएटिव आरि उपर नहीं और मेडिसिनल प्लांट कल्टिवेशन उपरे आपन जोटा कहउचंती हमर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी होईची एवं सी डिफरेंट फंडिंग दउची डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रो सेटा गोटे सब पार्ट सबऑर्डिनेट पार्ट गोटे आउ कल्टिवेशन कंजर्वेशन आ प्रोपागेशन सबुथि पे से डिफरेंट स्कीम्स आर देयर. एवं ओडिशा रो भी हमर सबुज विप्लवर डॉक्टर मिस्टर साहू अच्छा सी भी तार गोटे मेम्बर अच्छा बर्तमान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से भी आम बहुत किसी आम स्टेट्र बहुत स्कोप अच्छी किंतु लेट्स टेकर अच्छा से पर्पस रे क्वालिटी प्रपोजल गले निश्चय मु तार गोटे मेम्बर भी अच्छी जदि आमर एतिक आश्योर करें जदि क्वालिटी प्रपोजल गला ओडिशा रू फॉर द कल्टिवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आम निश्चय ताकू आगु को दे पारिबु. एवं एबे रिसेंटली आम देइचु पाइकमाल कॉलेज को भी देइचु डिफरेंट जदि प्रपोजल जाऊँगी तारी उपर आम काम करुचु. आउ सेकेंड क्वेश्चन आपण जो गोटे है एक्सपोर्ट आउ ये उपरे आपण मो प्रेजेंटेशन थिला मु आनीची भी आपण शेयर करदेवी. गवर्नमेंट ऑफ लास्ट कोविड टाइम रे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट CII सहित आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे कर सर्वे ए 16 टाइम बढ़ी जाइए जोटा कि लास्ट हो नथिला. आ सबुठु बड़ होची राजाश्रय. आपणकर जदि गवर्नमेंट सपोर्ट
गवर्नमेंट स्कीम उपरको आसीबो देन ओनली आयुष जोटा कि लास्ट बहुत दिन हला नथिला थिला किंतु एते फोकस वे रे नथिला किंतु बर्तमान प्रेजेंट गवर्नमेंट ताको नौची ने फोकस वे आउ डिफरेंट स्कीम्स आसी बहुत स्कीम अच्छी तेणु भल टेकर आसिले क्वालिटी प्रपोजल सबुठ बड़ जिनस होची क्वालिटी प्रपोजल्स बिकज कहीं पर्सनाली दे पारिबेनी क्वालिटी ग्रुप ऑफ पीपल बसुचंती जो थे कि हमर मैक्सिमम प्रोजेक्ट रे एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अछि नेशनल रिसर्च कंसोर्टियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग प्रेजेंटेशन रे कहि पारलिनी नेशनल रिसर्च कंसोर्टियम करिया जाउची जोटी कि डीएसटी डीबीटी आउ अदर सीएसआईआर ऑर्गेनाइजेशन मानक सहित गोटे 100 करोड़ गोटे वर्ष रे खर्च करिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहूची तेणु सो नाउ कोलाबोरेटिव रिसर्च पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्कोप बढ़ी जाइए आयुष सेक्टर रे पर्टिकुलरली क्यों प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग मच एम्फासिस ऑन दिस पार्ट एंड योगा डे जो अशोक बाबू कहले योगा डे जमती बर्तमान ए वर्ष नियर अबाउट 25 मिनिस्ट्री आयुर्वेद डे रे इन्वॉल्व हेले जोटा कि मैक्सिमम वे सेटा प्रोपागेट हो पारा तेणु फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छी ये इंटीग्रेटिव मो मैडम डायरेक्टर अच्छा आईसीएमआर सहित भी कथा होची आज 3टा बेले गोटे एमओयू अच्छी आमर एम्स न्यू दिल्ली सहित 2टा प्रोजेक्ट आम स्टार्ट करूँ सहित एम्स सॉरी भुवनेश्वर सहित एम्स न्यू दिल्ली सहित तो ऑलरेडी आम 4-5टा प्रोजेक्ट चलुची काम महापात्र बाबू थे भी Thank you. Acha, I will ask a simple question. Your son gets MBBS and Ayurvedic medical. Where to send it? Please, honest. Let us think how much we like our son to be the. You are not answering my question. Your son gets Kolkata Medical College, Puri Ayurvedic College. No, sir, what will you do? Sir, I am want not to... telling what happened 50 years back when there are no medical colleges. Sir, today there are 21 I want to medical draw one question from Alok Srivastav sir. Only small question. He was talking regarding medical tourism. Medical tourism, this is tourism in India. It mostly, suppose you are going for allopathy, the surgery particularly, then from the poor countries, my point is, from the poor countries, people will affordable price at India, they will come to India for surgery. My question is, for the high-end tourists, those who can afford more, we have got potentiality, particularly Panchakarma and other things also, particularly the Ayurvedic massage and other things. We can also propagate to that one. This is the medical tourism can further be enhanced. Even after surgery by allopathy medicine, for the this is the another course we can take up with the help of Ayurveda, Siddha and other things also, even yoga. And they will be completely cured and they can return their own countries with a lot of satisfaction. So my point is, medical tourism, once we are talking of, we must be concentrating more on Ayurveda and allied things. Thank you, sir. Yeah, I'll just answer one thing. I think a lot of people from Gulf, those are rich people, come to Kerala for Ayurvedic treatment. It's not that poor people come for cheap treatment. That's second thing, I every day take for last 25 years haldi, mahu or lembu. When I come, a brain tumor patient comes, any patient comes in stroke, I will take haldi, mahu, lembu. The patient asks me, you are a homeopathy doctor, Ayurvedic doctor, or allopathy doctor. The question is that you have to change your mindset, my dear. You are heavily loaded for brain surgery than the Brahmi tablet. If I tell you improve your memory, Brahmi tablet, will you take it? No. So question is very rightly put. My point is that since we drive allopathic system, I have focused on those aspects in scope. But if you look at the terrain of Odisha, it's rightly said that it's best undiscovered secret. And the kind of terrain we have, and if you compare ourselves with Kerala, which has dominance of Ayurvedic treatment and a lot of people from abroad come to the country, we can similarly develop a well-established model of wellness in Odisha. Definitely there is a huge scope, and the people of Odisha with the talent base we have both in Ayurveda as well as in allopathy can support both the things to emerge Odisha as a favoring destination for medical tourism. Apart from this, infrastructure improvement definitely is required. Why? Because currently the flight connectivity is very important. Most of the people who are coming from abroad for wellness land up directly in Kerala, which is currently not happening in Odisha. We need to change that as well. धन्यवाद डॉक्टर रेमन कुमार मिश्रा शुभ अपराह्न समस्तंको टुडे वी आर हियर on Odisha Health Connect
I want to know from panelist, and I want to give thanks to Mr. Sahu for its best effort for that. My question is, what is the aim and objective of Odisha Health Connect? यदि ये गरीब लोगों के लिए है, then what is the best definition of a poor? So I want that answer, please. What is the best definition of a poor? यदि जति ए प्रोग्राम टी आमर गरीब लोक मानक पाई बा तांको सहायक पाई तबे कौन हब गोटे गरीब लोकर डेफिनेशन? थैंक यू सर. ताको टिके क्लियर करिया पे चाहूसी ता माने जोटा से डॉक्टर को पचारले आमे जो कनेक्ट करूचंती हेल्थ रो कि आमे सो पैनलिस्ट सो इंटेलिजेंट पीपल जस्ट वी आर सिटिंग हियर एंड जस्ट डिस्कसिंग आमे कौन काज करि परिबा जो थरे कि देखुथिबे जेते लिवर टेक्नोलॉजी हो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो हेल्थ केयर फॉर ऑल हो आमे मेडिकल टूरिज्म कथा छाड़ी दियंतु ई सबु जिनिस रे आमे जो गाँ गहली रे गोटे लोक रहुची जो विषय रे जानि आशा हो अंगनवाड़ी हो दे आर बीन attached to other things जो थरे कि कट्स एंड कमीशन एंड ऑल ये गोटे ये डाक्तरटा भल ताकू माने डाइवर्ट करिक दे आर टेकिंग टू सम अदर प्लेसेस. हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प द पुअर फेलो फ्रॉम दिस कमीशन एंड कट्स? But first we should know who is the best poor person and who should be get these opportunities. ये opportunity को पाइबा पई के best ताकू तो first हमें selection करवा उचित. But how we can do this? Who is the best person for that? See, ये सवाल एकदम डायरेक्ट है, आंसर इनडायरेक्ट होगा. देखिए अभी हमारे if in our family suddenly the urination stops of one of the family members, we are like so learned people, we don't know where to go, whom to talk to. Suddenly we realize that in our family one nurse is there, or one paramedic is there, or one of the driver of one of the doctors is there in our society. Even though I am PhD, whatever, I will talk to him. अरे क्या हुआ? कहाँ जाऊँ? And the process starts. Whatever is known to him or her, the person is recommended. Yesterday only, IAS officer's PA, his family member faced the same problem, the daughter, and they are in the state capital में है, पता नहीं कहाँ जाना है. They are the real poor. Okay. Now, when we create the healthcare for all ecosystem, हमारे भारत देश में सारी चीज़ें उपलब्ध है. वर्तमान में जीना है. वर्तमान में जब जीते हैं तो जो द्वारपाल होता है अंदर जाने के लिए वो तैयार कीजिए. आशा वर्कर, जीविका और पीपल who are saying that I will stay in this district, मुझे यहाँ ही जीना है, यहाँ ही मरना है, मुझे आगे नहीं जाना है, मैं फैमिली के साथ हूँ. तो वो लोगों से 3-3 घंटे का आप ट्रेनिंग करो स्किल लैब के थ्रू. उनको पूरा एडुकेट न करो NABH स्टैंडर्ड के अनुसार. यू डेवलप देम टू सर्टन लेवल टू कैप्चर द मैकेनिज्म की ये है तो यहाँ जाना है. वो द्वारपाल का काम बराबर होना चाहिए. जो मे आई हेल्प यू डेस्क होता है ना, तो वो रोल होता है आशा वर्कर का, जीविका का. और जो कोई इंसान रत्नागिरी शहर में छोटा सा गाँव है उधर, तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त था अंशुमन करके, तो ही नेवर वांटेड टू गो आउट, तो उसको ट्रेन किया है डॉक्टर परकार ने. ही इज नाउ द मोस्ट एलिजिबल और एफिशिएंट द्वारपाल और मे आई हेल्प यू डेस्क. वी हैव टू क्रिएट दोस मे आई हेल्प यू डेस्क अक्रॉस द कंट्री. You got Ayushman, you got Swasthya Bharati, you got several Rajiv Gandhi Yojana, this Yojana, that Yojana, 64,000 crores, 1,000 crore given to Odisha. My God, but मेरे फैमिली में पेशाब रुक गई, कहाँ जाओ? होता नहीं फैसला. तो you require those द्वारपाल्स, and द्वारपाल्स could be public, private or family. I keep on repeating the topic given to me, even though it's a beloved topic. मेरा PhD उसमें ही हुआ है. तो आपके पास सारी योजनाएं हैं, वर्तमान में जियो, मेडिकल टूरिज्म, ये वो सारी चीज़ें होती रहेगी हमारा रेवेन्यू ऊपर करने के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए. बट हेल्थ केयर फॉर ऑल मीन्स एवरीवन हैज टू स्टैंड एंड वी हैव टू क्रिएट दोज मैकेनिज्म्स ऑफ द्वारपाल एंड मे आई हेल्प यू डेस्क, नॉट मे बी फुल्ली क्वालिफाइड, skill labs and all out. Okay, so I have given a buggle to your question, but said whatever I wanted to say in a very vehement manner. Thank you. Thank you.
आपन जो फास्ट सब्जेक्ट थिला एटा हमें प्रकाश भाई और मुआन बसी डिस्कशन काफी टाइम करथिलु कि हाउ टू गो फॉर दिस इज जस्ट ए ओपनिंग सेशन यू कैन सी द ईच टॉपिक इज परफेक्टली डिजाइन फास्ट ऑफ ऑल भाबंतु कि ओडिसा रे हेल्थ नीड कोन अछि हाउ इट इज यूजिंग प्रोफेसर अशोक महाबत आखि करबेन बिकॉज एम्स अपन सब देखुछंती एते पेशेंट एते लंबा वेटिंग हाउ एंड वेयर इज द प्रॉब्लम ही इज द बेस्ट पर्सन टू सॉर्ट आउट ऐसे आपन को गाइड भी करि परिबे देन सेकंड देखंतु डिजिटल हेल्थ जोड़ा मु कहली डिजिटल हेल्थ एते जिनिस हम समस्त जानिछे से के यूज करने एबे जने मोबाइल स्टार्टअप आस्तिला ही इज फ्रॉम यूएसए बट से इंडिया से अशोक हम गोटे करबे एमती काम द आप ऑलरेडी हमर से गोटे ओडिया प्लेट एबे अछि दिल्ली रे बोली होछि बहुत ओडिया लोक बट करछंती से एबे करछंती हेल्थ ऐप जोथि के आपनकर पॉपअप्स आसीबो कि डॉक्टर अशोक इट इज नाउ टाइम टू स्टैंड अप ये अशोक आपनकर शुगर टेस्ट होतला मंथली सो यू हैव टू फीड द पैरामीटर्स यू विल गेट द अलर्ट्स तो ए सब जिनिस जो आसुचे टेक्नोलॉजी याको पूरा फुली गोटे टेक्नोलॉजी सेशंस हबो आगो को देन थर्ड हैला कि आप तो टेक्नोलॉजी कले जोड़ा विजय बोले बेस्ट वन ऑफ द पर्सन ही इज लिस्टेड इन द 100 टॉप पेटेंट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री तो आपण कला पर ताको केमिति करिवे कि योर कॉपीराइट हैज बीन प्रोटेक्टेड आपण कले कोड गवर्नमेंट सिस्टम रो पाई परिवे जे हमर एटी अछंती डॉक्टर बडमाली से करछन जे गोटे सीपीआर माने आपण बिबंतु हार्ट को दबेया को पड़िबो जोटे काफी लोक जानि नांती आ गोटे बे मूवी देखते गोटे मिनिस्टर थिला से तांके ले कोन कि तांको से लोकडे झियोडे तांको सीपीआर गले मो फुकी देला घर आसला पर तांकर वाइफ तांको बोल झगड़ा कले तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर हम भाबु जे करिबानी इनिस अछि से गोटे मशीन कले जस्ट फिट हिम पुट द प्रोग्राम कि 20:1 रेशियो हबार अछि से सीपीआर करिवो तो एई सब हम होमग्राम रे हेलानी हम एई मान को नेकरी हम करि परिबा हाउ हेल्थ स्टार्टअप हेल्थ टेक्नोलॉजी पेटेंट बिजनेस एंड कमर्शियल हे परिबा ही इज द बेस्ट पर्सन आगु गावर सेशन हेला हम जानि परिबा तापर जोड़ा कहले मेडिकल टूरिज्म जोड़ा कहले मेडिकल टूरिज्म ओडिसा को आसिलानी मैक्सिमम नियर बाय स्टेट अछि बट वी कैन थिंक ऑफ होल ग्लोबल आ सबुडू कहबी पूरी बेलाभूमि ओडिसा द कोस्टल लाइन इज द फाइनेस्ट कोस्टल लाइन मो पर्सनल एक्सपीरियंस जो माने जुहू बीच जाइथिबे से देखले लागे गोटे कोन बीच जे ओडिसा बीच रे जाइथो से मोर पूरी सांगड गला कहले तो मोर सुसु करे इच्छा होबनी कोन से बीच बट ओडिसा रो बीच इज द फाइनेस्ट बीच एंड वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड फॉर द टूरिज्म एंड सेठी आपण योगा करंतु सेठी नेचुरोपैथी करंतु मेडिकल टूरिज्म जो कहछन दैट विल द एक्सीलेंट स्कोप फॉर एनीवन जोटा के बत अनएक्सप्लोर अछि तापर आपण कहले जदि मैडम अछि संग मैडम शी हैज द रियल डाटा ऑफ ओडिसा ऑन हेल्थ इश्यूज ओवर द टाइम एवरी ईयर वाइज आमे तांको हेल्प नै परिबा कि हाउ कैन बी डन को प्रोसेस करि परिबा आमे आगु सेशंस हे परिबो दिन डॉक्टर मनोज अमर अछि आछिन से कहबे हमरो पेशेंट हेल्थ केयर एंड सेफ्टी हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन डॉक्टर चंद्रशेखर ऑलरेडी दुबई रो आछन ही नो द फिलोसफी तो सब ग्रुप रे लोक अछंती आमे बर्तन चाहूचे पांचटा जिंस एतिर हला कि हाउ हेल्थ रिलेटेड रूरल हेल्थ आप आज भावतु रूरल हेल्थ इंडिया लिव्स इन द विलेजेस आम जदि रूरल हेल्थ को नबार तार कि पोटेंशियल कहीं जानी ना आप भावतु गोटे मुझे आज कहूँ मोर जन सांग ही कमिशनर इन अंडमान से सेठी कौन कर गोटे डॉक्टर से पेशेंट देखी दूसरी वर्कअप कर दूसरी देन ही आस अशोक सब डॉक्टर कनेक्ट कर देन गोटे कार्डियोलॉजी दैट इज कॉल्ड द सेकंड कंसल्टेशन यू कैन सेकंड ओपिनियन क्लिनिक वेयर देयर इज नो मेडिकल वायोलेशन से गोटे डॉक्टर देखी इवाल्युएशन करिछि जने एक्सपर्ट डॉक्टर पचारिला इन पेजेस डॉक्टर पेशेंट तार हिस्ट्री कहूँ से डॉक्टर ताको सेठी प्रेजेंटेशन देला एंड एक्सपर्ट डॉक्टर तो गाइड कला दिस इज हाउ यू कैन अचीव द रिमोटेस्ट आप अंडमान को गाँ दीपर लोक बस आप ट्रिटमेंट दे पारे तो ये सब जिन को आम नहीं पारे तापर हेल्थ टेक्नोलॉजी आप भावतु जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी कोविड बेले केम जना पड़ा रेलवे स्टेशन किए कोविड केम जना पड़ा दैट इज इन्फ्रारेड सिकनेस इंडेक्स माने से कोविड जो लाइट कैमेरा अच्छे से 60 मिनट देखिए लोकटार फेसटा अबाइगा लगुच देन रेड अलर्ट दिस मे बी द कोविड सागे लोक पहुँचले तो ये जो जिन सब आम या थ्रोरे आगू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नहीं पारिबा तो गोटे हेल्थ टेक्नोलॉजी गोटे आउे आम स्टार्टअप्स केमती हो पार हेल्थ रेट जोड़ा ओडिशा बहुत कम अच्छी हेल्थ टूरिज्म केमती प्रमोशन हो पार वेलनेस रिलेटेड होलिस्टिक हेल्थ से केमती कर ये सब जिन फेज वाइज आम कर आसवा बट प्रोवाइडेड समस्त मिसी करार अच्छी इट इज नॉट द ऑर्गस इट इज द एवरीवन्स इनपुट एंड बीइंग कंबाइंड हैंड एटा द ऑब्जेक्टिव धन्यवाद Actually, we are not health concerned. I have done health camp for the young people, middle order people and old people. So everybody has health problem. If you do the health camp below 20 years, 15% are pre-diabetic, 15% have blood pressure high and 50% depressed. Go to AIMS Bhubaneswar. We did a beautiful study. We did not publish it. It's a demoralizing. We took 550 nursing and MBBS student. उससे 40% का ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन था 2017-18 years. When they being 25, they will high blood pressure, they will never get checkup, and by 40 years, they will have heart problem and brain problem. So we are not doing health checkup. Preventive health checkup from age of 20. I am not telling you are 40, 20. Today your life is stressful. From the entrance exam for MBBS, engineering, management, your children are put to stress at 10 years of age, right?
So you are stressed. We are not doing preventive checkup. We think बच्चा है कुछ नहीं करना है. So you should get a preventive checkup. None of us do cardiac checkup every 6 monthly. Who does after 35 years? We say America the people are 45, 50, but India people are coming with heart attack 35. So our age is 20 years earlier. How many of you, tell me honestly, how many of you get 6 monthly blood sugar, ECG, TMT test? We do not. So we do not believe in preventive health care. Now come to Government of India. Government of India has Ayush. And when our aim started 2003, the first thing we told the government, we should have a Ayush. The Ayush building, and none of the aims is used. None of the aims I people use. Sometimes the doctor, I got in my next room in OPD Bhubaneswar, I used to sit 6 days. Next room was Ayurvedic doctor, left side, right side homeopathic doctor. No patient went there. When I finished 30 patients, I went to get Ayurvedic. How many? Sir, koi nahi aaya. Government started Ayush building, MRA लगा हुआ है. I started Ayush clinic. Next to my room is Ayurvedic and homeopathic doctor. When I say for your joint pain go to Ayurvedic, at the end of the OPD, somebody come with backache, joint pain, arthritis. I asked, this fellow came, he said, I don't want Ayurvedic treatment. Can you believe? When I am sending somebody for Ayurvedic treatment for the arthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, he said, I will go for knee replacement. Because he has been so much loaded with allopathy. Again I am telling, our mind is loaded with allopathic side. So even I prescribe you homeopathy, Ayurvedic, you will not take it. Yesterday I went to a homeopathy college. Every month I give 2 lectures. One in homeopathy college for good health, another, these are faculty on Ayurvedic and homeopathic medicine. There I talk about Indian integrated medicine and role of Ayush. If I talk to medical doctor, they will hear it. Do you believe they are going to hear it? When I go to Ayurvedic, they hear it for 2 hours. They say for 5 to 7 kar dijiye sir. But I have to come back. But if same thing I say, role of Ayurvedic to allopathic doctors, how many of our allopathic doctors will take Ayurvedic medicine? यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ऐसी बात है कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई गया नहीं. अरे वो पीच उधर के लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट के लिए है ही नहीं. Ayurvedic and Ayurvedic and homeopathic will have to be practiced at the family level. We have to practice at the family level. वो जो हमारी पुरानी जो ट्रेडिशन है कि घर में ही वो सारी दवाएं उपलब्ध होती थी. जो नानी होती है, नानी बताती थी, ओके तुझे ये हो गया, हल्दी ले लो, वो हो गया, ये ले लो, वो ले लो. सो यू डोंट गो टू द स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट. स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट गया तो जाइए ना आप एलोपैथी के पास. बट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट जाने से पहले घर घर में आयुर्वेदिक एलोपैथिक पब्लिसाइज करो. वो स्किल सेट जो नानी के स्किल सेट थे वो स्टैंडर्डाइज करो स्किल लैब के थ्रू, अंडर आयुष के थ्रू या किसी के थ्रू, एंड ट्रेन करो. हमारे उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट्स है. मैं यहाँ बैठ के 1 लाख कंट्रीब्यूट करके 30 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे सकता हूँ. मेरे से शुरुआत हो सकती है. ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए इन लोग का हेल्प ले लूँगा मैं. बट जो स्किल सेट नानी के स्किल सेट करने हैं, मैं 10 नानी को लेके जाके ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग कर लूँगा. सो वी स्टार्ट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक at skill level at home and treatment at allopathic level at the hospitals. Sir, last question, can I put? Yeah. Here my, I'll come to you, sir. Today India is facing one of the biggest challenges, technology. And we all are great research worker, knowledge worker, doctor. But you have the idea, and if it is your innovative idea and there is a demand in the market, why you are not taking that idea into a product? That is one of the challenges in Odisha, and being a Odia, I will say, our academics collaboration with industry is very poor. Skill is not going and skill is not up to that, and that's also part of what we are discussing in a socio-economic context. The biggest challenge today for a father or for a family, because I came from a remote place of Kalahandi district, I have seen the gap. When I went to Delhi for my higher education and went also all to other country, then we have completely divided. So
when we are talking about health technology, particularly health technology, we must not confine to the sector. We have Ayurvedic, the Director General sitting himself here. No one were talking about Ayush 64. But when there was a challenge, we transfer and commercialize, I think, more than 28 Ayush 64 to 40 to many of the industries. And that industry give livelihood to the common people. At my village, if you talked about hi-fi patented medicine, they may not be able to access. But my father, without going hospital, he managed, because I have. So point we wanted to bring that how we can take that technology in affordability, accessibility and adaptability. That is the challenge today. And India dependency on import of technology is very high. Syringe to CT scan, we all are importing. But are we creating livelihood for that? Do you have any ecosystem for creating such kind of opportunity, bringing technology to the market, giving livelihood to the common people at grassroots? And that's the work what we are planning and already created an ecosystem. Seeing is believing. I'll urge you and request you, come to Visakhapatnam. I think more than 30-40% people from southern Odisha depend on Visakhapatnam medical, not only medical, in other, it is become a medical tourism hub. Many of the Odia doctors are there because they have created momentum, ecosystem, accessibility, adaptability, affordability to the people of southern Odisha. Even my mother, मुझे बेटा भुवनेश्वर नहीं जाना है, तेरे पास ही आना है, तू कोई भी डॉक्टर को दिखा दो. Point is that is for a woman at miles looking for such kind of opportunity. That's the health connect. We have to connect the dot and we need to identify the dots, and that is very, very important, and that's the objective of Odisha Health Connect. We need to collaborate, co-create and cooperate, then only we can make the difference. Thank you. डिस्कशन थिला एवं जो माने पैनल ले थिले सनकु बहुत बहुत धन्यवाद ताका बहुमूल्य समय आसिले एवं एटी शामिल हेले एवं तांकर वक्तव्य रखिले. I have got a small question. Yes. I am Dr. Devadarshi, urologist. My father is also a doctor. So the day are passing by, we are having a shortage of skilled personnel. Previously, the undergraduate people, undergraduate only MBBS, plain MBBS, was able to do any kind of surgeries. Now, you are urologist. After getting a MBBS degree, we are struggling to get a seat in MS. In MS, after passing MS, after the 3 years, just like a traffic police is MBBS doctor. When a patient comes for a CTBS, you ask the patient to go to CTBS. For a GI surgery, ask the patient to go to for GI surgeon. Urologist, ask the patient to go to urologist. In this fashion, when we are also urologist, after 4-5 years of struggle, maybe 10 years of struggle, I am another last 12 years I am in practice. So 4 to 5 years, we are kind of a traffic police only. You need to say transplant I don't do, and that needs a lot of ethical committee and all. So you have to go to this hospital, these doctors. The same thing that happens also with the paramedics. What we should ensure is about the quality of treatment. At the same time, should increase the quality of the treating personals. So what the thing we should do to bridge between this gap? Just I need to know this answer. Actually, various state governments, they have started certain skill labs in the healthcare area. They point out, like the neighboring state Bihar, I have seen myself, there are 25 programs developed. There is a whole lot of department and building assigned, and they identify every skill set gap and they create a program around it. There are 6-member IAS team members there, led by Pratyay Amrutji, and uske under around 25 experienced people. Some of them are doctors, some of them are nursing superintendents retired, and they create small skill sets, and government ensures that whoever undergoes that training
they give some kind of job or role. So maybe that could be one of the answers, and this is happening very continuously. So in your area also, some kind of little more deep dive is required, picking up the brains from experts like you, and we create some mechanism of supporting and creating the support ecosystem. ये ज़रूरत लगेगी, सब जगह लगेगी, in your area as well as in districts and everywhere else. Hope I am trying to answer that question. I can say it is the family medicine. In India, we are not promoting the primary health care. You go to USA, if you are suffering from heart attack, you cannot go to a cardiologist without being seen by a primary care physician, which we are lacking here. So gradually, लोगों को ऐसे हुआ headache, neurology. So these are the problems of education system. हम MBBS only रट्टा मारो, exam दो, PG निकालो. Then PG time just focus थोड़ा सा कर लो कि मेरे को supervision करना है. That is our education. I think Sir is the pioneer in that. We have to think of our medical education. Medical education is not helping to produce a completely wholesome doctor in India. That is the biggest problem. Correct. And that is expected in future. मेरे को भी किसी टाइम में मेरा डर लगेगा because आपको headache हुआ, if you go to a neurologist, you will see the neurological cause. If you go to eye, you will see the eye. But with the problem may be somewhere else sinus, ENT. So we are always having a tubular vision. So what I mean to say is, can we have some kind of test, in each and every level for another 5 years? Every 5 years, the guy has to pass that test, skill test, so that can go up to the next level. That's what. What you are telling, time to time assessment of a person, his upgrade of knowledge, skill development and upgradation of the technology. This should have happened. But we don't have that. What will happen? Somebody has not upgraded, you will throw him out. India require 18 lakhs doctor. I didn't want to tell you all these things. We have produced last 75 years 7 lakh doctors. And we are, let me tell you, go to the internet, what is the need and what is the medical profession suffering today. So we are suffering, but there are 5 doctors, you are managing 1 medical doctor in a primary health center, go to the 50%. I was in UP for 4 years. Out of 4,300 PSC, only 1,000 PSC there is a doctor. The rest of the 3,000 odd PSCs were managed by pharmacists. So when you are talking that skill is that, we talk only quality. When I am fasting, don't talk me about 5-star hotel. I believe in quality. I propagate quality. But fast survival, then quality. If you look at the number of doctors you have produced, today why you are suffering? This is because India never produced huge number. We have 1.5 million engineers. Today we are only taking, after struggling when I was MCI chairman of the postgraduate committee, we are taking 10,000 postgraduate students. I told them make it 40,000. It's not about the numbers. It is not that. Question is that, let us go back to other side. We are overpopulated country, we are not about the numbers. If I produce a family doctor, family medicine doctor, some centers in India has got MD family medicine. The seats are vacant. Do you know how many seats are vacant in AIMS? I know every data, sir. No, data. It's all about the upgradation of the people. Question is that this all look like that. You have seats, people don't come. People have their own choice, and you cannot force somebody to go. This year, across the 23 AIMS, 300 postgraduate seats are vacant. 8 lakh people appear for AIMS entrance, but because why? Their choice of subject. You cannot force me to anatomy, physiology or gynecology. I am a surgeon. So question is that what you think, what I think, what the administrator think. Can you believe in India when the people are not getting MBBS or MD seats? Large number of seats have gone vacant in MD, MS. I am not talking MD, general medicine or MS. If you take about 43,000 postgraduate seats today, only MBBS seats is 83,000. 2022 MBBS seats are 83,000. Postgraduate seats. My question was how to upgrade them. That's it. Upgrade. These data are available in Google. We started how to upgrade and upgrade. Let me tell you. We started a program at Sanjay Gandhi. I don't know how many you know. I was in Sanjay Gandhi. I started every 5 years. Doctors should cover training for 6 weeks. When I went to health secretary, said, Doctor Sahab, we do not have doctors to come a luxury for the update course every 5 years for 6 weeks. He said, Doctor, if you can give us 7 days, because I was in Sanjay Gandhi 2006, most of the doctors did not know how to run computer. So we had a very computer program, updating program, digital medicine program, many programs. So health secretary say, if you want all doctors to be updated, where do I get doctor?
I have deficient by 2,500 doctor. You are telling send doctor for 6 weeks training. Okay. So your question is time frame upgradation of knowledge and skill. Okay. Sir, last question. हाँ मो डॉक्टर अरविंद महांती शिशु रोग विशेषज्ञ आगे सर. मु गोटे जिनस कहूँ गोटे लोक आम ओडिशार से बस्ती हो बा गाँ गंडारू हो बा माଳ अंचल हो जिते आसूची प्रथमे से तार जनता हॉस्पिटल माने पीएचसी को जाऊँगी जदि अधिका पैसा अच्छी से सेंट्रल हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स को जाऊँगी नहले जदि तार पाखरे जो विजु स्वास्थ्य योजना हो कि अन्य स्वास्थ्य योजना हो बा हेल्थ इंश्योरेंस हो ताहले से जाई पारछि जे गोटे बड़ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बा ये हॉस्पिटल को जीवा पई किंतु कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जीवा पई किंतु सेठी की जीवा कहले पॉकेट रे पैसा दरकार जो पैसा टी केवल देई दउछि जदि लांच देउछि माने हेल्थ इंश्योरेंस दउछि बा लांच दउछि केंद्रीय स्वास्थ्य योजना दउछि बा लांच दउछि विजु स्वास्थ्य योजना दउछि ताहले से गोटे सक्षम होउछि गोटे स्वास्थ्य योजना पाइबा पई किंतु छोट छोट जिनिस जोटा कि आमर छुआ मानक पई आ दिव्यांग मानक पई जोटा कि गाँ गंडार माଳ अंचल कि बस्ती अंचल कि टाउन अंचल लोक छुआ पाई पारुना छोटिया छोटिया जिनिस छुआ जन्म है कि सांगे सांगे जाई अध घंटा भितर माँ क्षीर खोईवा दरकार सेटा कोनोसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल होनी कोनोसी प्राइवेट हॉस्पिटल होनी कोनोसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल होनी ताकू सांगे सांगे डबा क्षीर दिया जाउछि जोठी कि आईएमएस मना करिछि डबा क्षीर दबनी कि बोतल दबनी ये जिनस छोटिया जिनिस पई कोनोसी जगह उद्यम करा जाउ नाही एक दुई दिव्यांग छुआ मानक पई से माने पूरा अछुआ ही रही जाउछंती तांको केही देखु नांती जदिओ सरकारଙ୍କର विभिन्न स्वास्थ्य योजना अछि तांको चिन्हट करिया पई दुखर जिनस 75 वर्ष पर मध्य दिव्यांग छुआ माने जना जाउ नांती तांकर थैथान होउनी कि तांको कोनोसी स्वास्थ्य योजना पहुंची पारुनी तण ए जगह रे आपण मानको मु पचारिबी जो लोक पॉकेट रे पैसा नाही से खाइबा को पाउ नहीं से औषध किनिबा केमती जदि जीव 300 लोकंक पछरे छिड़ा है धाड़ी बांधी जनता हॉस्पिटल चिकित्सा पाइब केमती केंद्रीय स्वास्थ्य एम्स को गले धाड़ी बांधिकी रहिबो कि बाहर मशारी टांगिकी शोइबो एवं सेठू तळु सकाळु आसिकी आउटर टिकट करिवो केमती ना जो लांच नै विभिन्न जगार स्वास्थ्य योजनारू सेठी चिकित्सा सुविधा पाइबो से जगह हमें कोन सुविधा रियलिटी थिला जो सर कहउछन He has no money to afford. He cannot stand in queue. What can government? देखिए सार तो बहुत वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ सार काफी एक्सपीरियंस भी अच्छी रियलिटी Lot of poor people come to me in some hospital now. I say, why don't you go to AIMS? Sir, मैं 3 घंटा खड़ा नहीं हो सकता. If a person who has no money cannot stand for 3 hours, do you think it is justified? He has no money in the pocket and he says, I cannot stand for queue. Government has made the hospital. If a good hospital, there are more patients, there is more queue. When I was a MS student, 45-year MCS student, neurosurgery training, late 70s, the waiting list was 3 months and we are operating 500 operation. In 85, we are operating 1500 operation, 6 months waiting list. And 2017 when I left, we are doing 7000 neurosurgery operation and 4 years waiting list. So where is the things have gone wrong? More you do, more is the demand, long is the queue. ओके Is not correct? आउरी नेक्स्ट सेशन अच्छी गोटे क्वेश्चन आंसर से भी करिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अशोक महापात्र डॉक्टर अशोक चौधरी डॉक्टर विजय कुमार साहू Last question, sir. Samastungu pranam. Myself, Dr. Annima Parida from physiotherapy background. So I don't know anybody from my background is present over here or not. Sir, I just want to ask, so how can you see what is the reality of means how can we connect in our profession with Ayush and so that we can do better, means we can upgrade. So what is the reality of India? What is the reality of our profession in India, sir? How can we... Occupational physiotherapy. Yes, sir. Yes, sir. See, we have a center for physiotherapy rehabilitation every AIMS. Today we have got 29 AIMS and each AIMS has got a physiotherapy and occupation center. Exactly. But if you send the person to go there and stand in queue for physiotherapy, they won't go and stand. What the people are doing, paralysis patients say, okay, we cannot come by taxi, we cannot stand in queue. I can call a physiotherapist who will take 250 rupees and come every day. This is what is happening. What did I say? The facility exists, a person doesn't want to take it, he blames the system, it's a circle.
So that is how you go to somebody's house and treat people for half an hour, take 250 rupees. Because it is a blessing for the practicing physiotherapists. People don't stand in the queue in the government hospital. Go to Oltapur. Sir, I am Oltapur is from- already sir, I am from there. 55 years old. It started somewhere 71 or 72. I know the project. 6 Oltapur like thing, Center for Excellent Rehabilitation Center was created. But people will not go there because they have long queue. Yes, sir. Sir, ମୁଁ ହେଉଛି ନିର୍ତ୍ତାର ମୋର UG and I PG know that. I area. know you may be a But, doctor because you are talking physiotherapy. Very few people talk about physiotherapy. Unless you have that background of knowledge, you will not ask question to us. Yes, sir. Sir, actually, it was previously we are working in rehab setup like ortho and neuro, but the things are going on. We are working in gynec setup, and now I am working as where Homi Baba Cancer Hospital, Varanasi. So, but from my personal level, on what can we do? Suppose big thing, government setup projects, so that is not in our control. So That is what you are telling lacking, because she is working for Sathi also. She virtually connected with Banaras. His 2 friends are coming to Sathi also. But believe only 1 or 2 people we can get. She wasted Yes, for sir. she wait. So that is we are giving free physiotherapy service. People still not coming. That is what the primary thing. People don't know. Awareness is not there, and we are not able to and think how that. can we improve, sir? That is how mass like this today. Actually, people think सस्ता मेडिसिन से अच्छा नहीं होता है. यानी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन होउची बढ़िया प्रश्न भी आसुची फ्री ट्रीटमेंट बैड ट्रीटमेंट. सर मु बर्तमान अनुरोध करी अर्गस सीईओ श्री प्रकाश साहू को से आसीबे एवं समर्थित करिवे जो माने अछंती हमर अतिथि माने जो माने तांकर बहुमूल्य समय देकी तांकर मतामत रखिले एवं धन्यवाद देवी दर्शक को जो माने बहुत बढ़िया प्रश्न भी कले एवं तार आंसर भी बहुत हुए मिलथियो बोली मु आशा करूची. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रथमे प्रोफेसर अशोक महापात्र वाइस चांसलर सोआ यूनिवर्सिटी फॉर्मर डायरेक्टर एम्स भुवनेश्वर. Dr. Ashok Chaudhary, Senior Consultant and Head Department of Hepatology and Liver Transplant. Dr. Vijay Kumar Sahu, Senior Regional Director NRDC, Ministry of S&T, Government of India. Dr. Alok Srivastav, CEO and DMS, Apollo Hospital, Bhubaneswar. Dr. Suhas Vashant Aradhe, Regional Director, Paras Healthcare. And Dr. Siddharth Misra, Medical Superintendent, Amri Hospital, Bhubaneswar. बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त को. ये अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सेकेंड सेशन किस समय थर्ड सेशन आरंभ करूँ. मो सहयोगी अर्गस एसोसिएट एडिटर शांति भूषण मिश्र कार्यक्रम परिचालना करेंगे. जो कार्यक्रम टाइटल स्पॉन्सर अच्छा शिक्षा और अनुसंधान, नॉलेज पार्टनर साथी, स्पेशल पार्टनर आमरी हॉस्पिटल, एसोसिएट स्पॉन्सर पारस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, कलिंग हॉस्पिटल लिमिटेड, विकास हॉस्पिटल्स, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेट्रो ग्रुप हॉस्पिटल. आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद. थर्ड सेशन खूब शीघ्र आरंभ हम. आपण एमती पार्टिसिपेट करंतु एवं भल भल क्वेश्चन पचारंतु. बढ़िया एक्सपर्ट पैनलिस्ट एवं रहिबे, तांको सहित आपण इंटरैक्शन करि परिबे. ओपन डिबेट हो, ओपन डिस्कशन हो. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Argus. It is the real voice of Odisha, a commitment to excellence, a name that stands for
people's first point of view and the truth. सचिवालयर सीएम कठारु ओडिशार पुरपल्ली रे अपांत अंचल रे थिबा कॉमन मैन रो सीएम रो तथा को आमे सेति की गुरुत्वर सहित